is a neurophysiotherapist. So in this video, we are going to cover some basic misconceptions or any myth and facts which you are not aware of, and the common questions which the aspiring physios like me and like all of us are having, which will be cleared by sir. I am very young in this field, and yeah, there is some amount of experience that I have gained in my journey which I would like to share. So I will try my best to answer the queries and questions. So let's begin, I guess. Okay, so let us begin with our first question that is very basic. Sir, can you tell me what is neurophysiotherapy and how does it differ from any other forms of physiotherapy? Okay, so neuro physiotherapy is not different from any other physiotherapy, but the type of patients that you see, जिस तरह के patients आप देखते हो, जिस तरह से आप उनकी treatment decide करते हो, वो एक different outlook हो जाता है. That is a different perspective that you have when such patients come to you. So yeah, there are some techniques है जिससे जो सिर्फ न्यूरो पेशेंट्स पे हम यूज करते हैं, उस हिसाब से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. दैट मेक्स इट अ बिट डिफरेंट. बट इम्पोर्टेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट द पेशेंट वांट्स, एंड आप अगर वो पेशेंट का गोल अचीव करने में उनको हेल्प करते हो तो फिजियोथेरेपी कुछ अलग नहीं है. इट्स ऑल द सेम. ओके, दैट इज ग्रेट. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा जो न्यू है इस फील्ड में या जो नॉन मेडिकल्स है and they're not aware कि physiotherapy, neurophysiotherapy होता क्या है इसलिए. So let's move on to our second question. So sir, there are many like neuro patients you treat on daily basis. So what tips or what care or what say strategies do you provide to the caregivers or the family members कि भाई ये चीज़ का ध्यान रखना और ये चीज़ होने मत देना और ये उनको घर पे करवा के लेना, because many of them are not cooperative or some of them are very cooperative. So how do you deal with that? First of all, जो सबकी syllabus में आता है patient education. So more than the patient, it is the relatives and the caregivers you need to be educated about the condition that the patient is having. Neuro patients in most of the cases tend to go into fatigue, tiredness, and in stroke cases, spasticity is something which you need to make sure that the caregivers and relatives are aware about. Otherwise, they keep on telling, like for example, if you have a flexor spasticity in the elbow, they will keep on complaining to you that इनका हाथ straight नहीं हो रहा है. So you need to make them aware about these are the complications that come with stroke. So it will take time to reverse. Sir, can you please share some techniques or approaches which you use in your patients? So normally what I prefer is anything that is functional or task related. If a patient is not able to reach or lift up his hand या अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो मैं ऐसी एक्सरसाइजेस ट्राई करता हूँ जो उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे कि पानी की बोतल उठाना, ठीक है, या स्विच ऑन ऑफ करना. ऐसी सारी टेक्निक्स या ऐसे सारे ट्रिक्स यूज़ करता हूँ इन एक्सरसाइज फॉर्म, ताकि जब भी वो घर पे जाए तो उनको ये सारी चीज़ें करने में आसानी हो. सो इट बिकम्स ईजी व्हेन यू ट्रेन अ पेशेंट यूजिंग अ टास्क, यूजिंग फंक्शनल एक्टिविटीज, बिकॉज देयर इज अ गोल, देयर इज एन एम, देयर इज अ टारगेट दैट द पेशेंट हैज़ टू अचीव. सो जब वो टारगेट अचीव करता है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन, अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड कि आज मैंने ये टारगेट रीच किया है. आई नीड टू चैलेंज माई सेल्फ और कुछ डिफिकल्ट टास्क में ट्राई करना चाहिए. तो दैट इज हाउ पेशेंट को भी लगता है वो इम्प्रूव हुए हैं, एंड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप भी जज कर सकते हो कि नहीं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ. पेशेंट के गोल अचीव हो रहे हैं, वी शुड प्रोग्रेस, वी शुड कीप चैलेंजिंग द पेशेंट. बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की जितनी कैपेसिटी है, दैट इज समथिंग जो आपको हमेशा कंसिडर करनी है. तो हर एक एक्सरसाइज हर एक पेशेंट के लिए अलग सेट की जा सकती है, हर एक टास्क हर एक पेशेंट के लिए अलग सेट किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कैपेसिटी. ओके, थैंक यू सर. ये सुन के काफ़ी जो एस्पायरिंग है, जो उनको न्यूरो फिजियोथेरेपी करना है, सो उनको एक मोटिवेशन मिल गया होगा, यस दिस इज समथिंग वी कैन डू. सर, हाउ डज न्यूरो फिजियोथेरेपी हेल्प विद पेन मैनेजमेंट? Okay, so neurophysiotherapy में pain management is not a priority that we see, but these neuropathic pains that are generated are mostly from the central nervous system.
जो ब्रेन इंजरीज होते हैं या स्ट्रोक होते हैं जहाँ पे आपके पेन सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि थैलेमस हो गया, पैराइटल कॉर्टेक्स हो गया, अगर वहाँ इंजरी हो गई तो फिजियोथेरेपी ऑन अ लोकल लेवल इतना हेल्प नहीं करता है. बट देयर आर स्टडीज दैट से दैट compression bandages and TENS modalities do help to some extent, but nothing sufficient is there. But yeah, in cases of radiculopathies, definitely modalities and your mobilization techniques, neuromobilization techniques, all these help in pain relieving as of now. सर लाइक हम लोग थर्ड ईयर में बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ते हैं, PNF हो गया, रूट्स अप्रोच हो गया और NDT हो गया. तो सर ये रियल क्लिनिक में हम यूज करते हैं कभी या कैसे? Okay, so these techniques are taught to you. आपको इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि you have a basic knowledge. जैसे कि आप इंटर्नशिप में जाते हो, इंटर्नशिप में आपको कोई एग्जाम वगैरह देनी नहीं होती, आपको मेन OPD संभालना रहता है, तो तभी आप ये सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हो अंडर सुपरविजन, ताकि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो राइट है या नहीं है, आपको खुद को पता चलेगा कि कौन से पेशेंट्स में कौन से टेक्निक इफेक्टिव हो रहे हैं. सो इंटर्नशिप का मेन पर्पस यही रहता है ताकि आप कॉन्फिडेंट हो कि कौन से टेक्निक्स वर्क कर रहे हैं. जैसे कि गेट ट्रेनिंग में मुझे NDT का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है. सो आई यूज NDT व्हाइल गेट ट्रेनिंग फॉर पेशेंट्स इन न्यूरो रिहैब एंड केसेस. सो मुझे वो थोड़ा सा इजी लगता है फॉर टू एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फॉर मी एज वेल. सो लाइक हाँ, सो जैसे कि आप जब इंटर्नशिप में जाते हो या आप जब ऑब्जर्वरशिप में जाते हो, जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो, आपको तभी पता चलता है कि आप जो टेक्निक कर रहे हो करेक्ट कर रहे हो कि नहीं, और करेक्ट कर रहे हो तो इज इट हेल्पिंग द पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं. So Brewstorm normally says about different stages of the patient going in the spasticity and everything, and किस तरह से voluntary movements का कंट्रोल आता है. So आप उसी को एक गाइडलाइन या फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो एंड आप फॉलो कर सकते हो कि पेशेंट कौन से स्टेज में 1 2 3 4, एंड बेस्ड ऑन दैट आप एक्सरसाइज ऐसे सेट करो कि वो सिनर्जी ब्रेक कर सके एंड वो एक्सरसाइजेस कोई फंक्शनल एक्टिविटी या टास्क रिलेटेड हो, तो इट बिकम्स मोर एंगेजिंग फॉर द पेशेंट एंड आपको ट्रैक भी आएगा कि कौन से स्टेज पे पहले था, कौन से स्टेज पे भी आया हुआ है. ओके, अभी हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस पे आए हैं. सो सर आपने इतने सारे मतलब कार्डियो है, स्पोर्ट्स है, ऑर्थो है, तो आपने न्यूरो फिजियोथेरेपी क्यों चूज किया? The main reason for me choosing this is the satisfaction that I was getting while treating the patients. That was something which was very, had a very joyful experience for me. अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको चलने नहीं हो रहा है, बैलेंस की डिफिकल्टी हो रही है, एंड with your help and your talent and skills, अगर वो पेशेंट चल सकता है, खड़े रह सकता है, इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है, so nothing like that. जैसे कि वॉकिंग इज एवरीवन्स बेसिक नीड और सबका मेन गोल वही रहता है कि यार मुझे बस चलना है अच्छे से, और अगर आपने वो अचीव करवा लिया तो नथिंग लाइक दैट, यू आर सैटिस्फाइड विद इट एंड इट मेक्स यू हैप्पी, एंड आई फील देयर इज नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन दिस. तो सर लास्टली मतलब ये जो भी व्यूअर्स है मोस्टली फिजियो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ही है, तो वुड यू लाइक टू गिव एनी बोनस टिप्स और एनीथिंग गाइडेंस टाइप कि वो फॉलो करें? There are few things that I was struggling during my UG days. सबसे पहला चीज़ है कि be clear with your basics, the posture anatomy which is there, जो आप examinations करते हो, special tests जो रहते हैं, be clear with that basics, because unless you are not sure what the basics are, you will not be able to diagnose the condition, you will not be able to examine the patient correctly to come to a diagnosis. तो अगर आपका एग्जामिनेशन रॉन्ग होगा, डायग्नोसिस रॉन्ग होगा, तो आप ट्रीटमेंट फोकस नहीं कर पाओगे अच्छे से. जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज रहते हैं, तो अगर आपके बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स क्लियर है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा सॉफ्ट टिश्यू या कौन सा बोनी स्ट्रक्चर अफेक्ट कर रहा है पेशेंट को. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स. सेकेंड चीज इज कभी मत सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, हाँ बस सिलेबस में इतना था, इतना हो गया, मुझे सब आता है. Never think of like that. Knowledge is always expanding, and every day you learn some or the other new things. Okay, so I hope बहुत सारी चीजें आपको ये वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होंगी. So do share this with your friends, and sir, thank you so much for your precious time and sharing the knowledge with all of us.
And thank you for having me over here for No. this podcast interview, YouTube video, जो भी आप बोलते हो. And if anyone feels have any doubts or anything, you feel free to approach me anytime for research purposes or any tips and techniques or any concepts. You are free to approach me. So, sir, can you share any success stories of the patients? So I had a 67-year-old male who suffered from infection of the cerebellum. So he had developed an infection in the cerebellum, जो छोटा मेंदू बोलते हो हिंदी में, ये उसमें infection जैसा हो गया था. So now cerebellum being an area where balance is an important role played by it along with motor functions. So the patient was not able to stand also. I used to go to a hospital to visit and treat him over there. Since day one I was there with him and he was not able to stand also. The moment he used to stand, he would sway off. But again, it was very important that he had a willpower that I want to walk. And from there on, within the hospital, we had 5 sessions. And then after 2 days, he regularly came to the OPD for 2 months, where we started with basic balance training, lower limb strengthening, motor control for lower limbs, proprioceptive training for lower limbs. Slowly, the balance improved. Then we started training him on advanced balance using game rehab, then treadmill, and then we started with agility training and dynamic gait training and all. So it was almost 2.5 months of daily exercises. And now the patient travels in second class local train from Mira Road to Churchgate without any help. So yeah, your rehab will prove successful if the patient's willpower is there and your dedication is there. So like this is one different case that I came across, and it turned out to be great. Like it is important that your dedication and patient's willpower both should connect, and the vibe should hit. Patient भी ठीक हो जाएगा. Okay, so we are having many rehab tools in rehab equipments in the clinic. So I am very excited to show them to all of you. But before that, you should visit this place and meet a great sir who has guided me since my second year, and he's a great person, I should say. So yes, for the next rehab tools which I am going to show, you should watch my next video. And with that, we are ending this video. And sir is also having the Instagram page, Happy Neurons. So I will put the link in my description box. So make sure you all check it out. And thank you for watching.